A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और ऐसी घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल हैं. और इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी. तो आप अवश्य ही इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये भी आज के ही फैक्ट्स पे आधारित हैं. तो आइए अब शुरू करते हैं 20 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1896 when Indian footballer घोषतापाल was born. अर्थात आज के दिन भारतीय फुटबॉल प्लेयर घोषतापाल का जन्म हुआ था. उनका संबंध था बंगाल प्रेसिडेंसी से और वह भारत से एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे. He was captain of Indian national team and played during the 1920s and 1930s. उन्हें निकनेम दिया गया था चीनेर प्राचीर का अर्थात द वॉल ऑफ चाइना का, because he was one of the best defenders of contemporary Indian football. उन्होंने मोहन बगान प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया था at the age of 16 years and in 1921 he was honored with the captaincy of this team. वह इस क्लब के कैप्टन रहे until the next 5 years. In 1924 उन्हें अपॉइंट किया गया as the captain of Indian national football team, a post from which he retired only later in 1935. अपने सभी contributions के लिए he was awarded the civilian honor Padma Shri in 1962, which is the fourth highest civilian honor awarded in India. और इसी संदर्भ में अगर बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो आप याद रखिए कि ये है द गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इन इंडिया एंड इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका गठन हुआ था 1937 में. और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, सो दीज आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ये एफिलिएटेड है टू फीफा, that is the International Federation of Association Football, with its headquarters in Zurich in Switzerland, जो कि विश्व की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट हियर, which is associated with 1921 when the Malabar Rebellion had taken place. अर्थात आज के दिन 1921 में मालाबार विद्रोह हुआ था. The Moplah Rebellion, which is also known as Moplah Riots of 1921, एक culmination था of a series of riots by Mappila Muslims of Kerala in the 19th and 20th centuries against the British as well as Hindu landlords in the Malabar region, that is in the northern Kerala region. The Khilafat movement भारत में शुरू हुआ था 1919 में in support of the restoration of caliphate in Turkey, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था. खिलाफत मीटिंग्स इन मालाबार incited communal feelings among the Moplahs, और ये मूवमेंट बाद में डायरेक्ट हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसके साथ साथ उन सभी लैंडलॉर्ड्स के इन द मालाबार रीजन हु बिलोंग्ड टू द हिंदू कम्युनिटी. इसके परिणाम स्वरूप there was a large scale violence that saw systematic persecution of Hindus and British officials. कई घरों और मंदिरों को भी इसमें डिस्ट्रॉय किया गया. अगर बात करें इस रिबेलियन के प्रोमिनेंट लीडर्स की, so here the names are Ali Musaliyar and Variya Kunath Kunjahmad Haji. And from August 1921 till about the end of the year, the rebels had under their control large parts of Malabar. साल के अंत तक रिबेलियन को बुरे तरीके से ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दिया था, जिन्होंने एक स्पेशल बटालियन क्रिएट की थी, द मालाबार स्पेशल फोर्स फॉर द रायट. By November 1921, 67 Moplah prisoners की हत्या हो गई थी while they were being transported in a
closed freight wagon from Tirur to central prison in Podanur. इस कारण they died because of suffocation. इस ट्रेजेडी को अक्सर वैगन ट्रेजेडी के नाम से याद किया जाता है. And now with this, let's quickly see the next fact of today. So this is associated with 1944 when former Prime Minister of India Rajiv Gandhi was born. अर्थात आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था. वह एक भारतीय पॉलिटिशियन थे जिन्होंने भारत के छठे प्रधानमंत्री का पद संभाला था फ्रॉम 1984 टू 1989. उन्होंने लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके पश्चात वह 1966 में भारत लौट आए एंड बिकेम अ प्रोफेशनल पायलट फॉर द स्टेट ओन्ड इंडियन एयरलाइंस. परंतु later he became an active part of Indian politics, and in 1981 he was elected as a member of parliament from Amethi in UP. He took the office of Prime Minister in 1984 after the assassination of his mother Srimati Indira Gandhi, who was the previous Indian Prime Minister, and with this Rajiv Gandhi became the youngest Indian PM at the age of 40 years. His notable initiative as Prime Minister was passing the anti-defection law in January 1985. और यही नहीं, कई और जाने माने इनिशिएटिव्स भी हुए इनके कार्यकाल में, such as the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, National Policy on Education 1986, and he founded the Jawahar Navodaya Vidyalaya system, as well as he introduced measures to significantly reduce the license raj after 1990. His last public meeting, however, happened on May 1991 at Sri Perumbudur near Chennai, where he was assassinated जब वह campaigning कर रहे थे for the Sri Perumbudur Lok Sabha Congress candidature, and this assassination was done by a female member of the Liberation Tigers of Tamil Eelam. And now with this, let's have a look at the other fact of the day, which is associated with the अक्षय ऊर्जा दिवस that is observed today. अर्थात आज के दिन भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है. अक्षय ऊर्जा दिवस is an awareness campaign about the developments of renewable energy in India. It is celebrated on August 20 every year since the year 2004. The Ministry of New and Renewable Energy MNRE Government of India has declared this day as the National Renewable Energy Day to commemorate the birthday of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Energy such as biogas, solar energy, wind energy, hydroelectric power are just few examples of अक्षय ऊर्जा. ये बेहद आवश्यक है कि अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी को सही तरीके से और पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाए टू फाइट द क्लाइमेट चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस. The main motive of this day is to make people aware that they have to think about renewable energy alongside traditional energy. हमें जो ऊर्जा प्राकृतिक रूप से मिल रही है उसका पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और इसीलिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हम पारंपरिक ऊर्जा का अधिक समय तक उपयोग कर पाएंगे. The renewable energy sources include carbon neutral sources like sunlight, rain, wind, tide, waves and geothermal heat. ये कहीं बेहतर है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो है फॉसिल फ्यूल्स, but which are exhaustible and take millions of years to replenish themselves. वर्ष 2004 में the Prime Minister had released a commemorative stamp and 12,000 school children had formed a human chain to promote renewable energy. और अब चलिए देखते हैं the next fact of today, which is that every year 20th August is observed as World Mosquito Day. अर्थात आज के दिन विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है. It is observed annually on 20th August and is a commemoration of British doctor Sir Ronald Ross's discovery in 1897 that female mosquitoes were responsible for transmitting malaria between human population. The London School of Hygiene and Tropical Medicine holds Mosquito Day celebrations every year as an awareness program to promote hygiene and to protect people
from exposure to these disease causing vectors. अगर बात करें 2021 की थीम की, so the theme is reaching the zero malaria target. And now with this, let's have a look at which questions do we need to solve. सबसे पहला है, which football player is known as चिनेर प्राचीर, अर्थात किस फुटबॉल खिलाड़ी को चिनेर प्राचीर के नाम से जाना जाता है. ऑप्शंस हैं ए जर्नेल सिंह, बी चुन्नी गोस्वामी, सी खोस्तपाल, or is it D Pradeep Kumar Banerjee? The second question is, when had the Malabar Rebellion taken place? अर्थात कब हुआ था मालाबार रिबेलियन. ऑप्शंस हैं ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922. तीसरा प्रश्न है, हु वॉज द सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के छठे प्रधानमंत्री कौन बने थे. ऑप्शंस आर ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी चरण सिंह. With this, the fourth question says, when was the अक्षय ऊर्जा दिवस observed for the first time? अर्थात अक्षय ऊर्जा दिवस पहली बार कब मनाया गया था. ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2006. और इसके साथ the fifth and the last question is, when is the World Mosquito Day observed? अर्थात विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है. ऑप्शंस हैं ए 17 अगस्त, बी 18 अगस्त, सी 19 अगस्त, डी 20 अगस्त. And now with all these interesting questions and some very important facts, आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. With this, have a great day. Thank you so much to all of you and please stay safe.